अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस क्या है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेजिस्टेंस इन द सीरीज। रेजिस्टेंस सीरीज का मतलब क्या हो गया? व्हेन टू आर मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, जब हम दो रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज, तो हम इनको क्या कहते हैं? सीरीज। नाउ लेट्स ट्राई टू calculate, find or derive a formula for calculating the combined resistances of two resistances connected in series। तो अब हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं? हम दो रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं इन द सीरीज एंड वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन फॉर द कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस के लिए हम कैसे इक्वेशन डिराइव करते हैं? लेट्स सी द डायग्राम। जब हम डायग्राम की तरफ देखते हैं, हमने दो रेजिस्टेंस ली R1 और RT, इनको कनेक्ट किया बाय मीन्स ऑफ V वोल्ट्स। बैटरी हम यूज़ करते हैं V वोल्ट्स। This is the source. So two resistances R1 and R2 are connected in series. A battery of V volt has been applied to the ends of this series combination. Now let's suppose the potential difference across the resistance R1 is V1. Now let us suppose the potential difference across the resistance R1 is V1 and the potential difference across the resistance R2 is V2. Now हमने अप्लाई क्या किया है? V वोल्टेज हमने अप्लाई की है। सो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होनी चाहिए अक्रॉस द टू रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? टोटल वोल्टेज शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। दो रेजिस्टर्स को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इनको हम पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी V वोल्ट देते हैं। ना फिर हमने सपोज किया कि V1 जो है इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस across the R1 and V2 is the potential difference across the R2. Now the total potential difference must be equal to V1 plus V2. Now let's apply the Ohm's law. Ohm's law हमें क्या कहता है? Ohm's law हमें कहता है V upon I is equal to R. Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference maintained across the two ends, where V is the potential difference, I is the current flowing through the conductor, and R is the resistance. Or we can say V is equal to I into R. Now since V is equal to V1 plus V2, so V1 must be equal to I into R1 and V2 is equal to I into R2. Try to understand the things. Potential difference किसके बराबर है? V1 plus V2। तो ओम्स लॉ जब हमने अप्लाई किया, हमने कहा V is equal to I into R, where I is the current, R is the resistance. Now V1 is equal to I into R1 and V2 is equal to I into R2. Now let us see this equation. V is equal to V1 plus V2. Since V हमने किसके बराबर लिया है? I into R. So we can write, instead of V we write I into R is equal to V1 किसके बराबर हमें निकला? I into R1 plus I into R2. So this is the equation. Now I into R, that's current into resistance, is equal to I into R1 plus I into R2. तो I हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हमें मिलेगा? I into R1 plus R2
R1 plus R2. Now cancelling I from both sides, ये I और ये I कैंसिल हो गया, तो R किसके बराबर निकला, R1 plus R2, R1 plus R2. सो इससे हमें क्या मिलता है, हमें लास्ट पे कहते, whenever the resistances are connected in series, the combined resistance, that is the total resistance, is always equal to the sum of the individual resistances. It's always equal to the sum of individual resistance. So resistance in series में हमने क्या सीखा, whenever there are two resistances connected end to end, then they are said to be in series. Now we can calculate the net total resistance. This can be calculated using this Ohm's law. तो लास्ट पे हमें क्या मिलता है, R is equal to R1 plus R2. So this is the net resistance R. We can put it in the statement like this: the combined resistance of any number of resistance connected in series is equal to the sum of individual resistances, or the total resistance is equal to the sum of the individual resistance in case of series.